वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। और आज हम एक चिल स्ट्रीम के लिए आए हैं विच इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट एफपीएल। और इतना एफपीएल कंटेंट बन रहा है ना इस टाइम पे इंडिया में, बट लोगों को पता ही नहीं है। तो हमने सोचा है कि सारे क्रिएटर्स जितने भी हम जानते हैं जो अलग अलग टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, लेट्स ब्रिंग देम टुगेदर और फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एंड देयर इज गोइंग टू बी सम फन सेगमेंट्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट वेलकमिंग ईच क्रिएटर यार। पहले तो सो we have Rajat from Indian Fantasy Premier League. भाई, he is trying to make a community of FPL managers जो पूरे इंडिया के FPL managers हैं. And welcome Rajat भाई. Would you like to tell us what is IFPL actually? Sure. Dhruv, thank you so much for introducing me. Hi, everyone who's watching. My name is Rajat, and I'm based out of New Delhi. I'm a Liverpool fan, and I founded IFPL almost a month and a half back. Okay, so Dhruv and I actually met at a FPL panel a couple of months back at the Fanball meet. That's where we became friends, and we've been just bantering each other out since we met, right? Because I'm a Liverpool fan and he's a United fan, of course. So what I'm trying to do with IFPL is very simple, guys. We have found a scope similar to FIFA in fantasy, right? So right now, India has almost 97 million Premier League fans in our country. Okay, as per the latest data from Geostar, I work for Geostar, so I have access to this data, and it's very out of those 97 million, I would say I found some numbers. Just a second. No worries, all good. All good. Let's welcome other people till then. We have last man yapping, not minute, last man yapping. And there are four people who do random challenges, fun challenges, if they lose in their mini league. भाई, कितने क्रेजी बात है ये, बिकॉज वी हैव सीन द फॉरेन क्रिएटर्स डू समथिंग लाइक दिस, बट इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। और मैंने रील्स देखी है, दैट्स व्हाई आई फॉलोड देम, आई रीच्ड आउट टू देम। एंड अब आपके सामने ये चार लोग हैं। एंड विश्वजीत भाई फॉर सम रीजन, ओके दिख गए, मेरे को लगा आप आए नहीं हो, बट या, सो वी हैव एवरीवन हियर। एंड भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, Vishwa Bhai is the Chelsea fan. Richard is a Liverpool fan. Neil is a Tottenham slash Barcelona fan. He's a Barcelona fan, but if he wants to support a team in Premier League, he'll support Tottenham for some reason. And then there's Vishwajit Bhai, who's a Arsenal fan. So why एक तो in group भी banter है. But before we go into that, let's talk about what is the idea behind last man yapping. So anyone, Should I go? yeah. Yeah, Yeah, good. So we're just a group of six boys who grew up together since we were like children, basically in the same radius of maybe 1 kilometer or something. And we've been hanging out every single day growing up, talking about football, playing FPL for the last like 4 years together in the same leagues. And we figured like we want to do something about football, something related to football, maybe a podcast in the future, something like that. And then we thought, why not just make something funny, like something that's like low commitment and something that is more natural to us. And we thought, screw it, let's just start a meme page sort of thing, that where we just, if someone loses, they do something funny, and that'll be funny for us firstly before anything else. And that's how it started. And then one of the videos blew up in quotation. So then we were like, okay, right now, okay, this has like some potential, so let's maybe like start thinking about it. So then now we're like kind of taking it seriously, hopefully more commitment and more projects to enter, and more opportunities, and more platforms also in the future. Definitely. Content looks amazing. And we have FPL Pulse Talk also joining in. And Aman Bhai, he has been to many of our streams. He's a Chelsea fan as well. So Aman Bhai, we are trying to introduce what actually their individual respective pages mean. So FPL Pulse Talk, we know it's a serious FPL page where you guys give suggestion. So I just want to know what's the vision with FPL Pulse Talk. अगर आप थोड़ा बताना चाहोगे क्या क्या है आपकी vision final?
Sure, yeah. I was just listening to the FPL yappers. So it's very similar story for us as well. Like, so it's a channel that, four of us have started, me and three other friends of mine, and we've basically been playing football. We've been playing FPL for, past 4 or 5 years now. And football is a common passion for all of us. So, and we're all from Bangalore. We've started our work there. We worked together in the same firm at one point, and that's how we became friends. And it's literally what we have done in our free time together. So we thought, why not to take this to others as well? Let's just discuss FPL that we do amongst ourselves with everybody. And that's the idea, to try to bring a new perspective. We're all data scientists, so we would like to look at data a lot, and we like to see what are the key insights, what can we make sense out of it. So that's what we're trying to do here on our page. We have a YouTube channel, FPL Pulse Talk. We also have Instagram, Pulse FPL. So yeah, please do follow us, give our content some chance, and see if it helps you in your FPL strategies. Definitely. And we have one more creator joining us. Goloe Yudi Bhai, he has been always there. He has pushed me to open this YouTube channel as well. So भाई अब हमें पता है गोल ओए की तो व्हाट इज द विजन. मैं आपसे पूछना Yeah. चाहता हूँ आपकी क्या विजन है आपके एफपीएल को लेके जो आपने इतनी खराब शुरुआत करी है भाई. भाई नेक्स्ट लेवल सीन हो गया मेरे साथ यार. फर्स्ट टू गेम वीक्स वाज पैथेटिक भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड. थर्ड गेम वीक में मैंने वाइल्ड कार्ड लिया, आई थिंक 72 आई स्कोर्ड, बट अमन वाज सजेस्टिंग कि आई शुडंट डू इट, बट समवन फ्रॉम अमन्स पेज हु इज एनोनिमस, भाई पता नहीं एफपीएल पास के कितने लोग मेरे साथ चैट करते हैं भाई, पता लगता नहीं कौन चैट कर रहा है. उन्होंने बोला No, no, मेरे no, को Yudi bhai. I कि think looking at your team, you were saying it was I only basically. So maybe he got it. Yeah, sorry for that. So he had quite a few injuries in his team, a lot of issues, and he was saying that I'm going to take a -12. I was like, "Ki, that is absolutely just not done. Rather, just hit the wild card. It's fine even if you have to hit it right now." And then we shared a couple of drafts with him, and Yudi bhai wild carded, and it yeah, worked out I pretty well in activated it. that week. Yeah, I'm I glad did it worked out decent. well I for think you. 72 is decent, bro, for a wild card week, It's pretty good. I honestly. feel it's pretty Yeah. good. Like anything above 60 is very good in FPL on an average every week. Just to introduce you guys, we have again आप लोग थोड़े लेट हो गए तो रजत भाई we have here who is trying to build a community of Indian fantasy Premier League managers. He works with Geo Hotstar as well, and he's a Wow. Liverpool fan. तो यूडी भाई भी Liverpool fan है, and he I think Delhi Corp, maybe he's involved Indian Corp. He's always Nice. involved when there is Liverpool भाई. So you guys, like everyone here, should definitely get in touch after this stream भाई, because this is something, 100%. this is a common space by 100%. Yeah. which we can take forward. So Rajat bhai, Yeah. you were saying something what you were trying to build with IFPL. So if you want to elaborate on that, and then we can start some fun segments. Dhruv, before that, I would like to ask, where is United sitting right now in the table? By United sitting right here, 15th, I think. you 14th, you 15th. are you are right now sitting in a United space. So I think you should be a little, We're this is all where united Loki in the comes demise of live. United. yeah. Yeah. Okay. Imagine, bro, three Liverpool fans, one Arsenal fan, two Chelsea fans, one Barcelona slash Spurs fan, and they have to come to a United channel. Bro, I just want to say one thing. That's It's a friendly On It's a stream. good, your on a channel, decent bro. note, I, We I will come for just say you. one thing. I think top of the league, you'll never say that. yeah. Oh my We will God. say that. We have said that for 20 years, bro. It's your time. Chill. True, true, true. Calm down. As Erling Haaland said, bro, be humble. Stay up. Or अभी as यार as Eric Ten Hag ईमेल अभी said, आ रहे हो यार, कैसी बातें कर रहा and है Stay humble, bro. Stay humble. okay, I'll start about IFPL. Yeah. Cool. So, guys, very simple. Okay. What I'm trying to build is a FIFA equivalent of Fantasy Premier League. Okay. All of you know football fans is a big set. Okay. Out of which a very big subset and a community has been FIFA players. Like in this call, I don't even have to guess. I will assume that all of you guys play FIFA. Please correct. Anyone can raise their hand if no one plays FIFA here. Okay. Same question for FPL, right?
majority of Premier League fans are invested into FPL these days because I've been a sports marketing guy for the past 8 years, and guys, let me tell you this: there is no bigger sports marketing activation than Fantasy Premier League. Okay, I don't know if you guys have noticed, but Champions League is going big this season with their fantasy league. NBA has tried. Dream 11 has, what they've done, right? So this fantasy gaming, the kind of buzz it's creating for the league. Like for example, Rajat without FPL and Rajat with FPL. With FPL, Rajat is focused on all 20 teams and players, and I'm sort of keeping an eye on everything that's going on within the league, right? Compared to Rajat, not without FPL, Rajat only cares about Liverpool, right? Rajat doesn't care about United. Rajat doesn't care about Chelsea. Rajat is just focused on Liverpool and Liverpool finishing top of the league, right? So, what is happening is if any of us want to join a FIFA tournament right now, okay, I believe FIFA has blown up so much that all of us can just open our phone, search a FIFA tournament around us, and we'll find one. Okay, that's how big the community has become. Compare it to Fantasy Premier League, guys. It's not. It's very unorganized. Okay, it's very unorganized, but the scope and the fan base is so damn big, right? So, okay, I'll throw some numbers at you guys. Okay, since I work for Geostar, I have access to some data. 97 million Premier League fans watched Premier League last season, okay, on Geo Hotstar, out of which you can say about 66% was on Star Sports, and the remaining 33% was at Geo Hotstar, okay, either on your handheld device, on your connected TV, or anywhere where you can play Geo Hotstar, right? Now, this becomes our big set. Out of this big set, there is a subset, very big subset of your FIFA players, okay? And there is another smaller subset of fantasy players, okay? Now, fantasy is extremely unorganized in terms of the communities that exist, okay? I'm sure all of you guys are part of private leagues, okay? Some of you guys are playing just for free कि okay यार अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक लीग है, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ लीग है, I have a league with my colleagues, right? All for fun, all for banter, all just to, have a good time, right? Usse upar, there is one more level of more into FPL fans where they are trying to make the game more interesting by introducing money into it, right? For example, हम 8 लोग हैं. I come up with the idea saying, guys, let's pitch in 500 rupees each. Okay, we make a pool of 4,000 rupees, winner takes all. Okay, now different permutation and combination here happening across the market, not a single one big league which is happening. Okay, this is the scope and this is what I'm chasing. I am trying to create the biggest bloody FPL league in our country first and then globally. Okay, I want the Premier League tech team to have some, brain fry because of the number of traffic we get in our league. Because I think there's a 50,000 limit to the league. Okay. As per my intel, which I got from the Premier League, in India, we have about 1.8 lakh Premier League FPL players. Okay. As of 2025, 2024-25 season. Okay. This is a huge number, guys. This is bigger than what 1.8 Yeah, it seems very low, yeah. 1.8 1.8. lakhs low भाई Some इससे है. would ज्यादा say. तो मेरी Yes, रैंक है भाई yes, I feel it's yes. even higher. I think it might be even One higher, no? from what I got from PL India, they were saying 182 as per their latest numbers. भाई I One इससे lakh think you're ज्यादा मेरी eighty missing a two. रैंक zero है उन्हें there. बताओ उसे बताओ I मेरी would be रैंक किससे surprised. ज्यादा है भाई Indian in हाँ India. In इंडिया India. रैंक हाँ Not इंडिया की globally. ही बात कर इंडिया रहा रैंक हूँ इंडिया की ही India रैंक की की कर बात रहे कर हो. रहा हूँ Okay. भाई ठीक है. So I'll check on this number. Roughly मेरा estimate है कि 10 लाख तो होंगे. 10 लाख. Even Exactly. though मुझे Yeah. प्रीमियर लीग ने 1.8 बोला, I was also shocked like you guys कि what the hell, no, that can't be Yeah. true, right? So
I am basically right now we have about 150 active managers in a league. We are chasing at least 1 Okay. lakh by end of the season. Okay, so that's what IFPL is all about. And we are basically gamifying the entire experience. Okay, we are whoever joins our league. We have some partners on board like CoPlay, Tackle from Behind, your Drums of Heaven. These are both local and your national brands, right? CoPlay is Huddle's sister company, which Huddle, I don't know how many of you know Huddle, but Yeah. Huddle So it's a received platform, right, where you can book your, I mean, I think fields Coach, and grounds to play exactly. with badges, others, coach. right? Yeah. Exactly. So basically, it's the Zomato for sport. If you want to order food, you open Zomato. If you want to book a venue, you go on Huddle, right? It's as Oh, simple it's as like that. Playo over here, kind of. Yes, Playo is but quite big in Pune in Pune, right? So in and Delhi, Mumbai. Yes. so right now there's a like this space is blowing up. Okay, turfs, pickleball courts, paddle courts, everything is just blowing Yeah. up across the country. Okay, especially all of us are living in the metro cities of our country. All of you, I can like without even visiting your city, I can tell you that recently abhi koi pickleball court khula hoga, koi football turf khula hoga. So it's blowing up, and we are literally seeing this revolution in front of our eyes. Okay, these guys have come on board. They are giving us co-play credits. Whoever, like for example, we get a differential of a week. Okay, we announce that okay, we're gonna gratify the manager in our league who has the बेस्ट डिफरेंशियल फॉर एग्जांपल मैंने एलिसन को कैप्टन बना दिया एलिसन ने फिर से वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट लास्ट मिनट गोल मार दिया ठीक है सो आई गेट I am the winner of differential of the week and I get some co-play credits which I can avail, right? So we are working with brands. We are trying to amplify the experience FPL fans are having. We are not touching the game, by the way. We're not making our own rules or anything, which also happens in a lot of private leagues, right? So this is IFPL, guys. I would, after this call, I would send invites to you Yeah. because I want. डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही 100%. अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया है एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी मैंने पहली बार ऑल दो मैसेज आज ही डाला है क्योंकि यार हमारी क्लब कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है कि मैं मैसेज डालूं लिवरपूल फैंस के बीच में भाई इट्स लाइक रसिया गुंडों में फंस जाए तो मैं कुछ पंगे ले नहीं रहा हूँ भाई अभी बट डेफिनेटली आप लोग तो ठीक ठाक क्लब ही सपोर्ट कर रहे हो भाई तो आप लोग डेफिनेटली पार्ट बनो ऑल दो वहां पे टोरा यूनाइटेड का ही है अभी भी लड़ाइयां यूनाइटेड वाले ही कर रहे हैं जितना मैं देख रहा हूँ पर डेफिनेटली बहुत मजा आता है कम्युनिटी का पार्ट होने में एंड अगेन एज ही सेड प्राइजेस भी हैं एवरीथिंग है एंड इफ यू बिकम अ पार्ट इनिशियली देर आर वे मोर थिंग्स दैट कैन हैपन बाय कंटेंट वाइज इवन आगे जाके Oh एंड yeah, we're देन कमिंग launching a show. Sorry to cut you out, या Dhruv. We are launching the IFPL show. Okay, it's gonna be like a podcast where we bring in different guests of different types. Like one of my crew members. Okay, I don't know if I should be announcing this, but okay, teaser. We are recently we have access to Fabrizio and we have access to David Ornstein. Okay, so we are personally gonna try to bring them on board. As we speak, we are speaking to Gravenberg and Mickey What? Van Deven's agent. Fuck, If bro. if I these need free jerseys on that, bro. Please. absolutely. So we in fact last month we made a video for Gravenberg, which we sent it to him because he recently became a father, right? So yes, up we are basically uh, trying to whoever's involved in FPL. Like for example, if Ryan Gravenberg plays FPL, he's coming on board. Like we are going all out. Another United fan, by the way, in our crew, he's trying to get Zidane Iqbal on board. Okay, to play in the league, and then once guys, it's very simple logic. Okay, just imagine, forget fantasy Premier League. Imagine we are playing football, okay, and suddenly opposition team में Gravenberg turns up or Mickey Van de Ven turns up, okay. The excitement shoots up, right? कि what the fuck just happened? So we are trying to डेफिनेटली do it on FPL. It's as simple as that. डेफिनेटली भाई इसी के साथ Lovely. थोड़े भाई कमेंट्स ले लेते हैं
It's good to see FPL community is increasing, but Salah versus Gandhi, who will win? Bhai, Gandhi is something you can't beat, man. Although a 97th minute penalty to Salah is of course on the cards, भाई. So you can't do anything about it. रजत भाई को मैंने अक्षता दीदी के साथ देखा है. अक्षता दीदी के साथ तो सबने देखा है भाई, पर रजत भाई ने फैब्रिजियो की बात करी और तब मुझे अक्षता दीदी का नाम याद एकदम से आया था. मैंने कहा ओह, बट ठीक है, जिसको But you पता know है what, उसको पता है. Lord, I would like to Lord he gives a lot of respect to everyone, so big up to Ritin also. Big up. या भाई रितिन भाई डेफिनेटली वन ऑफ द यार, मतलब मैं तो बोलूंगा, क्या ही बोलूं, मतलब शब्द ही नहीं है यार. कैसे बहुत ही प्यारा बंदा है यार, टू बी ऑनेस्ट. शब्द ही नहीं बहुत ही प्यारा बंदा है यार. मतलब यार आप सही में. शब्द सोचना चाहते हो ना, फिर आपको लगता है ये छोटा शब्द है यार इसके लिए. लाइक ही इज एवरीवेयर भाई. महापुरुष। ही इज द फैब्रिजियो भाई हियर, जो कंटेंट क्रिएटर्स को साथ में ला रहा है. एंड भाई ही इज एवरीवेयर. ही इज फुटबॉल, क्रिकेट, साथ में से यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि निकल जाना चाहिए किसी भी हालत में भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी हमें. तो सही में. इसी के साथ यार थोड़ा फन सेगमेंट स्टार्ट करते हैं. सभी एफपीएल वाले हैं, तो लेट्स शेयर आवर रैंक्स गाइस. सबकी इतनी ब्यूटीफुल स्टार्ट रही है, ठीक है. अभी इतनी बातें करते हैं सबने, कोई चैलेंजेस कर रहा है, कोई भाई डेटा साइंटिस्ट है, यूडी भाई और मेरे को छोड़ के यहाँ पे सबने बहुत बड़ी बातें कर दी है. तो अब एक बार रैंक शेयर करते हैं सब लोग. लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो Bro, I वैसे need to dig यार. कोई नहीं, रजत भाई ने I मूछ need to पाली leave है भाई. before I can It's share my fine rank. भाई. I need to leave. आपने भाई इतनी बड़ी बातें कर दी है भाई. आईएफपीएल आप इतना बड़ा बनाना चाहते हो, आप ग्रावेनबर्ग लाना चाहते हो. आप ग्रावेनबर्ग के सामने क्या 2 पॉइंट लाके जीतोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो Yes, अब आप इसे स्टार्ट Lalit करेंगे. Modi आपकी doesn't रैंक play क्या है IPL, my friend. भाई? Lalit रजत Modi भाई doesn't play IPL. आप बताओ रजत भाई, आपकी रैंक क्या है भाई? अब मेरे को इतना जरूर पता है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया मेरे को मैसेज करा था. मैं कूना कैप्टन कर रहा हूँ भाई. कूनिया 5वें मिनट में इंजर्ड हो गया उस मैच में भाई. 5वें मिनट में इंजर्ड हो गया भाई उस मैच में. अरे भाई. Okay, what rank do you want? जस्ट द वर्ल्ड रैंक. वर्ल्ड रैंक World rank. Okay, just a second. Hmm. जरा देखिए कौन कितना पानी में है भाई. सब अपनी खोल लो यार, रैंक्स क्या है. I am 2,600,000. कौन भाई? I 2 think you're मिलियन in इज a गुड great place. आई थिंक. अमन भाई का Oh my डेटा God. साइंटिस्ट निकला, कह रहा 2,06,000 इज गुड भाई. हाँ भाई. Not a horrible Maybe start. some 3 million something. 3 मिलियन पे है रजित भाई. 2,06,000 पे, सॉरी 60,600 पे है रिचर्ड भाई. तो विश्व भाई, व्हाट्स योर रैंक? मेरा तो बढ़िया चल रहा है भाई. आई एम 295K. Damn. Oh wow. 295 Okay. भाई. This is विश्व LMY. भाई, this This is LMY, but हाँ. Hmm. Amazing, भाई man. हद हो गए भाई. 295 के, आई थिंक यू शुडंट बी ऑन दिस पैनल, बट दैट्स फाइन. भाई नील विश्व- भाई, व्हाट्स योर रैंक भाई? मेरा अराउंड 25,000 है. नहीं 25? Fuck hell, bro. 1,000 नहीं है. That is Sorry, insane. my bad. Million, bro. Wow. Million. 4-0 डाल दे इसमें भाई. 25 लाख है. हाँ, 25 लाख है. Not bad, यार. 25 lakhs is very good. 25 lakhs is a very good rank भाई. 2.5 हम वर्ल्ड million रैंक की ना. बात कर रहे हैं Amazing, भाई. भाई. 2.5 million. हाँ, वो रैंक ही है ये. ओ माय गॉड भाई, दैट इज गुड भाई. तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई रिचर्ड भाई क्यों हार रहे हैं. हर आपका हर वो हर क्यों ही बार. बार बार वो करे जा रहे I was हैं. not even talking about my. विश्वजीत, या विश्वजीत भाई, व्हाट्स योर रैंक? League ranking. I was भाई talking मेरा रैंक तो मेरे को नंबर ही इतना बड़ा है, मेरे को पढ़ने ही नहीं आ रहा. पहली बात, इट्स कोई नहीं समवेयर भाई, लाइक मिलियंस में है कहीं. तो मैं मतलब अच्छे से आ रहा हूँ नीचे से, धीरे धीरे आप धीरे बस धीरे. आगे वाला नंबर बता दो, हम समझ जाएंगे. 13. 13? One- 1.3 हाँ. मिलियन भी हो सकता है. 1.3 मिलियन कुछ. यस, दैट इज नॉट अरे बैड भाई. रिचर्ड लाइक मेरा सुनोगे तो मैं तो 4 मिलियन पे हूँ भाई अभी. 4 मिलियन, पता नहीं क्या हो गया है मेरे को इस सीजन. आपने यूनाइटेड के प्लेयर्स रखे होंगे शायद, इसलिए. भाई एक ही है, ब्रूनो United फर्नांडिस, और उसने हाँ. ठीक ठाक दे दिया था मुझे भाई. मतलब मेरे पास बर्नले के 2 है खेल में. यूनाइटेड के. एम्बो भी है और ब्रूनो भी है. भाई नाइस. इसी के साथ डेटा साइंटिस्ट भाई अमन भाई, हम सारी बहुत सीरियस बातें बुरा हाल है करके भाई. अब 4+ million. 4 4+ प्लस मिलियन. million right now. Yeah. तो फिर कहाँ जा रही है डेटा साइंटिस्ट? नहीं कहाँ चल जा रहे रही हैं भाई. आपके scientists भाई?
No यार, I think it's a little bit वो ना कि प्री सीजन थोड़ा मिसलीडिंग सा रहा, स्पेशली विला वाला. So I ऑली basically have वॉटकिंस both के रैंक पे आए क्या Rogers सब? and Watkins. So भाई that has मेरे पे hurt भी me रॉजर्स pretty एंड much. वॉटकिंस है भाई, मेरे पे भी तो रॉजर्स एंड तभी तो हम डबल दोनों वॉटकिंस अप। है। 4 मिलियन एक पे बार हैं. तभी तो हम दोनों चार सही में मिलियन पे भाई। हैं. और मेरे पे सेमेन्यो भी नहीं है भाई, मैंने इतना सोचा था रॉजर्स की जगह फर्स्ट डे से सेमेन्यो रखता हूँ भाई, बट Yeah, यूडी भाई Rogers आपकी versus रैंक Semenyo कैसी was है a भाई? straight away straight shootout. Like why that was the comparison at in game week 1, and then why decision सबसे भारी पड़ा है actually. It could have यूडी covered भाई यार actually, वो वाली रैंक Semenyo रैंक कवर करवा देता सारी. ट्रू। मैं भाई का क्लिप वाला मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, so I'm going to कोई नहीं भाई। tell you my rank now. I think I'm doing quite decent, yeah. Just 5,830,528. That's all, bro. बहुत ही I बहुत feel ही very बढ़िया rich looking रैंक at है this भाई। number. I hope ये monetize हो जाए number, but भाई yeah. अगर रैंक के हिसाब से हम मोनेटाइज होने लगते तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा दुखी आई थिंक नील भाई और विश्व भाई होते, बट अभी वो ज्यादा खुश है क्योंकि रैंक ऐसे ही वर्क करता है। इसी के साथ यार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार एफपीएल में। लाइक लास्ट सीजन वाज एक असिस्टेंट मैनेजर चिप आ गई थी, उसको खेल के मुझे तो मजा आया था क्योंकि मेरी चल गई थी, बट लोगों को पसंद नहीं आई। अब इस बार सारी चिप्स को डबल कर दिया गया है, और पहले हाफ में भी है, सेकंड हाफ में भी है। तो इस बारे में आप लोगों का लाइक व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट दिस यार? लेट्स स्टार्ट विद एफपीएल पल्स टॉक भाई, कि सारी चिप्स डबल हो गई हैं भाई। आपको लग रहा है ये हाँ. फन होगा ज्यादा, या फिर इट इज मतलब इन माय ओपिनियन आई वांटेड द लाइक जो पहले था वैसे ही रहता, वंस वी कैन यूज द चिप उसमें मजा आता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? हाँ यार, मतलब हमने अपने फर्स्ट प्री सीजन पॉडकास्ट में ये सारी बातें करी थी, और हम भी यही लाइक देवर टू ओपिनियंस एज यू आर सेइंग कि एक तो कैजुअल प्लेयर के हिसाब से ना, इट द ओल्डर वे वाज फाइन. You can always come in even if you left like for you could not sort your team out for 1 or 2 weeks. You can come back in, you would not be in a very bad situation. अब क्या है कि अब आप 2 वीक मिस कर गए, और वो 2 वीक ऐसा फ्लिप फ्री हिट या वाइल्ड कार्ड वाला विंडो था. नाउ यू आर वे बिहाइंड द पैक. तो कैजुअल प्लेयर्स के लिए इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, हु आर नॉट लाइक अस, जो हम 5 5 10 10 वीक्स अहेड का एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं कि अच्छा आप ऐसे करेंगे, कब वैसे करेंगे. वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू स्ट्रेटेजाइज और थिंक अबाउट इट एट द लीस्ट. तो बट whoever is involved, उसके लिए इट्स वेरी एक्साइटिंग, लाइक ऑल, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हियर, क्योंकि इट हेल्प्स अस ट्राई टू इट हैज ब्रॉट अ न्यू डायमेंशन टू द गेम, जहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं. देर आर मोर वेज टू कम बैक एंड गेन रैंक्स बाय मीन्स ऑफ प्लेइंग दीज चिप्स, राइट. एंड देर इज अ लॉट मोर वेरिएबिलिटी एज वेल, कि आपने जब खेली, मान लो अगले वीक अपने हिसाब से maybe the chip didn't work, but I played this week and it gained me a lot more points. So now all of a sudden I'm way ahead, than you. Yeah, and if I was way behind, I'm almost at par with you now. So those things are very interesting. For me personally, I am in favor of, changes in general. So there are a lot of changes, not just chips. Like इन्होंने point के उसमें भी, जैसे defcon point is a major game change. I think it's a whole game style change करने वाला वो एक फैक्टर बन चुका है at this point. तो it's very interesting at least कि हाँ, they are bringing in some fresh air into the game. I think it's a welcome move. सही बात है, दैट इज नाइस। इसी के साथ यार एफकॉन आ रहा है, तो अब भाई विश्वा भाई आप टॉप ही पे हो, तो आपसे ही बात करते कि विश्वा भाई आप मुझे बताओ, एफकॉन आएगा, सारे प्लेयर चले जाएंगे, अब क्या करें फिर? मतलब वाइल्ड कार्ड बचा के रखे, खेल दें, क्या करना चाहिए? मतलब इस बार तो ये लोग 5 ट्रांसफर भी देने वाले हैं हमको बिफोर AFCON। तो ऐसा भी नहीं है कि यू हैव टू प्लान स्पेसिफिकली फॉर दैट। मतलब मैं आज 6 गेम वीक में बैठ के 15 का सोचूं, तभी तो यू कांट रियली प्रेडिक्ट दैट। तो फिर वाइल्ड कार्ड व्हेन योर टीम रियली नीड्स इट। अभी फिक्चर्स आ रहे हैं अच्छे, 6 7 8 9 13 भी अच्छा है, तो प्ले इट व्हेन योर टीम नीड्स इट। और एफकॉन के लिए कीप इट लो, क्योंकि हमारा बजट भी खुल जाएगा, तब तक साला नहीं रहेगा। यू कैन काइंड ऑफ मेक अ गुड बेंच बूस्ट टीम आल्सो लेटर। मतलब अगर बजट खुलता है एंड विद 5 free transfers, you can always look forward to that.
सही बात है। इसके साथ लिवरपूल फैन थे और साला का टॉपिक उठ ही गया है तो भाई 14.5 मिलियन भाई, 14.5 मिलियन का ये प्लेयर है भाई। और मतलब पेनल्टी ही मार रहा है जो तुम्हें मिल रही है लास्ट मिनट में। हम्म। पर अभी एथलेटिको मैड्रिड को खोल दिया है इसने। अभी सब लोग बात कर रहे थे कि इट्स टाइम टू सेल साला, अब सब लोग सोच रहे हैं कि भाई रख लेते हैं साला को। और आप लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन वंडर किड साइन किया था भाई 150 मिलियन में, जो बहुत लोगों ने अपनी टीम में ले रखा है कि ये तो फाड़ ही देगा। वो 0-0-6 पे चल रहा है इस टाइम 7 पे। करने एक वाला मैच है। और वो जेडन सैंचो को मैच कर देगा। तो इन दोनों का क्या करना है जिनकी टीमों में ये है भाई? क्या रजत भाई साला के बारे में आप बताएं, रिचर्ड भाई वर्ड्स के बारे में आप बताएं। तो रजत भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज विद साला भाई? Salah ka guys, he is bloody so unpredictable these days. Okay, I am always like in a boat trying to stay away कि यार इस साइड मैं उसे रखूं या ना रखूं, ठीक है. I started the season without Salah for the first time in my FPL career, जो 10 साल पुराना है. मैंने कभी साला के बिना स्टार्ट नहीं करा. This was the first season because I was like, okay, he didn't have a really good preseason. Let me try to make a team without Salah. Okay, then you guys know what he did in the first two games, right? You guys saw what he did against Atletico Madrid last night. तीन लोगों या को बंदे ने पकड़ के रखा है गोल मारने के लिए, तीन लोगों को. ओके, एंड साला के साथ गाइस, यू इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन माय हेड. यू नीड टू हैव either Salah or Haaland in your team. ठीक है, you cannot move ahead without either of them. मतलब आप बट पीछे रह अगर आपको एक ही प्लेयर चाहिए थ्रू आउट द सीजन, साला या हालैंड, राइट नाउ कंसिडरिंग राइट नाउ फॉर्म, अब आप चेंज नहीं कर सकते, विच प्लेयर वुड यू पिक, साला या very हालैंड? very easy pick, Dhruv. It's Haaland. हालैंड, दैट कमिंग फ्रॉम अ Reason being, लिवरपूल फैन भाई। हाँ, देशद्रोही क्योंकि ओपी कर I'll दो tell you भाई why चैट में। also. I'll tell you why also. क्योंकि हालैंड को AFCON नहीं खेलना है. ओके, दैट्स अ स्मार्ट आंसर भाई, आई No, वाजंट but also I As एक्सपेक्टिंग think दैट। we need to as consider simple as that that. Salah is coming of age first, and Salah has always been a per 90 blanker only, but he turns up in terms of goals and assists. So I am not Exactly. going to write him That off. is it. I'm not going to write him off, and I am a very unbiased, realistic, analyzer of football. So I'm going to say कि उसको Haaland लेना है, Haaland ले लो FPL के लिए, but Salah, I'm telling you, he's gonna nick in a couple of good goals, So Absolutely, absolutely. I ठीक है, have him by the way, and I don't have Haaland right now, but सही yeah. बात है। that's how I'm तो seeing it. लेट्स AFCON. गो टू रिचर्ड। रिचर्ड भाई वर्ड्स भाई, 2.3 पॉइंट, 2.3 पॉइंट यहाँ पे हमारे कमेंट्स में है। अमित भाई ही इज ऑल्सो FPL, एफपीएल लैब से वो अपना ट्विटर पेज चलाते हैं, बहुत ही बढ़िया पेज है वो भी, उसको जाके फॉलो करो, मैं लिंक डाल दूंगा। उनके पास भी वर्ड्स है भाई, और वो भी इसी बात से परेशान है, 2.3 पॉइंट, 2.3 पॉइंट। तो क्या करना है भाई इसका, कुछ करेगा I ये? अब तो आईफैक भी आ गया। start of the season, I had Wirtz in my team because I was like, he's like the only guaranteed starter, probably in that midfield five. So I was like, it's a no-brainer that I have to have him, and also his stats from last season were insane. So I thought he'll pick up the same positions and things like that. But second game week itself, I removed him because I was like, this he's probably going to take some time to settle in. Plus, he's doing a lot of work off the ball. Gakpo is a bit closer to goal. Ekitike is getting into good position. So I was like, maybe I should get Ekitike before Isak, like during that period when Isak is not going to be fully fit. So I went with that only. And I didn't have Salah either. I went Haaland because Salah, again, with this one's with Frimpong's injury, I was like, he's going to stay wider because if he's probably going to be closer to goal only if Frimpong and or Bradley, one of them is going to play. So these were, but I'm still confused. But last game changed everything for me. The game against Atletico changed everything again because Wirtz played an incredible game. He was picking up good positions. He could have had a goal and an assist easily. And playing with Isak What also. was that one moment? Sorry, ध्रुव भाई. What was that one moment, भाई? साथ साथ मतलब भाई ऐसे शोले में भाई हाथ पकड़ के चल रहे हैं Soboslai and Wirtz, and then no one is कोई बॉल स्ट्राइक ही नहीं कर रहा भाई. Soboslai squared the ball to someone else only. I was like, what is happening, bro? Just like I shoot. think Wirtz needs to take more Yeah, shots. he should have just taken that shot. Yeah. He needs to just free himself a bit more. I think he's taking an extra touch, or he's just shying away from shooting more and just being himself more. I feel like, but you can see in the way he glides through the midfield that this guy has something special that nobody in the team has. Like he's easily our best player, bar Salah probably statistic.
True that. यार इसी के ध्रुव साथ भाई एक थोड़े और चीज बोलना चाहूंगा यार, थ्री ऑफ यू यार, गिव हिम सम लीवे मैन। आई जस्ट सॉ योर रील भाई, उसको बेचारे को भगा के एंड यू मेकिंग हिम डाउन शॉट्स एंड बियर्स एंड ऑल दैट ब्रो, व्हाट पनिशमेंट्स आर दोस ब्रो? Like हाँ super, भाई like this guy is like going through a lot, Honestly, bhai. I deserved it, man. I deserved it. भाई Deserved but it, that deserved is it. that is what you Clearly. get when you have words in your team भाई. Even you are suffering because of that भाई. You had Frimpong and words भाई. Frimpong got subbed on 59th minute. We were watching the match live and you were तभी तो abusing भाई वाइल्ड भाई. कार्ड यूज किया FPL भी खत्म हो गया भाई. मैंने। Adish भाई, love you too. Adish is my friend भाई. वो कह रहा है Dhruv is boring, of course भाई. बट फ्रिम्पोंग इज अवेलेबल. हाँ, अब तो फ्रिम्पोंग अवेलेबल है. इसी के साथ यार आते हैं जरा टॉटनम फैन से भाई. टॉटनम इज डूइंग गुड भाई. एंड भाई मिकी वैन डे वैन, पेड्रो पोरो भाई, क्लीन शीट्स पे क्लीन शीट्स आ रही हैं. स्ट्राइकर तो चलो कभी मारते हैं नहीं मारते हैं. रावी सिमोन्स भी आ चुका है. तो एफपीएल के लिए तो लाइक अ वेरी गुड टीम. तो आपका क्या कहना है यार? लाइक व्हाट आर द मस्ट हैव प्लेयर्स इफ यू कैन हैव जस्ट वन प्लेयर फ्रॉम टॉटनम थ्रू आउट 38 गेम वीक्स, which would be that player भाई? नील भाई. Van de Beek. Van de Beek. वैंडेवैन. I, बट वो यार yes. आप ये भी तो देखो ना, वो इंजर्ड भी हो सकता है. लाइक ही इज वेरी प्रोन टू इंजरी. हाँ, but वो जैसे खेलता है, like he's just running on the field like a beast. It's like the thing is, maybe he might be prone, but the thing is that he's also their core center back, like with Romero, obviously. But getting the goals from a center back who's running through a field is like someone like I think Van de Ven is only capable from whole Premier League defenders, I would say, not just Tottenham. 4.6 मिलियन में तो Last season, got a वैल्यू फॉर couple मनी of है वो. bangers. Yeah, And that was I was about to say. 4.6 million is a very good price by. और जिनके पास पहले से exactly. 4.5 million में, like it's a no brainer to have him in the team. Hmm. और लोग काफी लोग मेरे जैसे थोड़े बेवकूफ पेड्रो पोरो के साथ गए हुए हैं जो थोड़ा महंगा है भाई. Same. बट I think he has Dhruv, a we think he a has a lot more like. of a अटैक है. yeah. भाई उसका गोल थ्रेट तो ज्यादा होता ही है, पर फिर भी हाँ, मिकी club वैंडेवैन size. मार देता है तो क्या ही कर सकते हैं भाई हम फिर. लाइक बट पोरो आई का थिंक एक्चुअली गोल थ्रेट नहीं था पहले भी. इट वाज मोर लाइक असिस्ट थ्रेट कि ही वुड Assist. टेक हाँ, corners or free kicks. अब he has nothing like neither corners nor free kicks after Xavi Simons. वो पहले उस तरफ तो ले रहा था. Other side hmm. Kudus had already started taking. अब Kudus has everything started has from gone. the first game week only, I think so. कोई नहीं Yeah. भाई, Obviously, मैं big. आपको लिख के दे सकता हूँ. जिस दिन भाई मैं निकालूंगा वो हैट्रिक मार देगा उसी भाई, दिन इसलिए मैं निकाल ही ले रहा हूँ भाई उसे अब, क्योंकि मेरे को भरोसा है भाई इस बात पे. इसके बाद I think विश्वजीत वो भाई डर आप पे ऑलिवर आते हैं. का सबका है कि वो that is जिस that दिन is that there is Ollie निकालेंगे Watkins. The day you take him out, that's when he scores. भाई आई पता है he मेरी might ना score against पर्सनल Sunderland. No, निकाल honestly, दो इस गेम में. but I think मेरी Oli Watkins is very overrated, bro. Very भाई overrated. I मेरी don't know, like you पर्सनल guys are बीफ like, चल रही है भाई एस्टन विला फैन से. तो एस्टन विला फैन मेरे कमेंट में आगे ना हर बार लिख के जाते हैं विला बेटर देन यूनाइटेड. अब वो 4 में से एक गोल नहीं मार पाए हैं, इतने बुरी हालात है उनके. तो मैं वॉटकिंस निकालूंगा ही नहीं. 38 गेम वीक्स ब्लैंक कर दिया. फिर मैं I think कम से कम this मजा तो आए मुझे. ये I think सीजन है. what लास्ट सीजन वगैरह तो अच्छा था वॉटकिंस. no, but लास्ट 2 still, सीजन. if you look at his genetics also, it supports him only with his body shaning and body shifts, right? He's not a very quick player, and he's a very hard-working player, right? भाई So इवन मॉर्गन रॉजर्स भी बेचारे पता नहीं क्या कर रहा है भाई. भाई पूरी टीम यूडी मिलके भाई गोल भाई नहीं मार बहुत रही है बहुत यार. that was very brutal यार. बाप दादा yeah, को that's भी a गाली fact, दे दी भाई. वॉटकिंस के साथ साथ. भाई मैगेन आप भाई बुढ़ा हो गया वो. Like he's lost his legs like completely, भाई. Look at John McGinn. क्या player होता था 2 सीजन पहले, and यस, now he's like उन्होंने अब completely एक collapsed. बहुत ही बेहतरीन प्लेयर ले लिया है, जेडन सैंचो नाम का भाई, फ्रीडम फाइटर. तो आई थिंक एस्टन विला इज ऑन द करेक्ट वे टू गो टू रेलीगेशन. विश्वजीत भाई आपसे बात करते हैं. आर्सेनल तो कुक कर रही है, लाइक दे आर कुकिंग इन प्रीमियर लीग राइट नाउ. बट किस प्लेयर को Yes. ले भाई? अगर हालैंड अगर आप ले रहे हो, योकोरेस बहुत महंगा पड़ता है. बट आप योकोरेस ले लेते हो तो फिर आप साला के साथ मतलब वो टाइप की बात है. अगर योकोरेस को हटा दे, विच इज द मस्ट प्लेयर कि ये होना ही चाहिए भाई टीम में? I think Arsenal का अगर देखा जाए तो they have just conceded like I think 1 goal throughout the Premier League के पहले 4 games. So I think going with the Arsenal का defense is like a no-brainer. Or you can even take Raya for that matter, I feel. क्योंकि अगर short चाहिए तो Gabriel या राया में से दोनों में से एक तो पक्का है. I still feel that Timber and Calafiori might get injured somewhere down the line, but Gabriel and Raya are like as solid as it gets for me, I think. सही What बात है what is भाई. up with Mosquera, भाई? ध्रुव भाई भाई क्या solid, मतलब he's deputized that role really well, man. Valencia. भाई वो Saliba, उसको Yes. देख के
रियल मैड्रिड से कहीं लिंक आ गए भाई। सलीबा, मेरे को तो लग रहा है वो सलीबा का ही पीआर है कि वो कह रहा है मैं मैड्रिड चला जाऊंगा, कहीं उसको maybe. रिप्लेस ना कर दिया जाए भाई। नहीं, उसको वैसे बट टाइम ही नहीं मिल रहा है. He's fit. They're not playing him now. भाई तो मेरे को तो लगता है साका का Lot भी of यही हाल होगा defensive भाई। options. लुक एट मादुएके भाई, इफ ही कंटिन्यूस प्लेइंग लाइक दिस, साका कहाँ खेलेगा भाई फिर आके। Yeah. Correct. बस रिटर्न्स चाहिए अभी मैडुएके से थोड़े. He's doing like नहीं तो फाइनल fantastic I नहीं feel. है उसका. Which will come हाँ. for Just like sure. Chelsea does. Hey, you I guys, feel what do Saka you? it's in my always opinion like is that still more यार. direct. I think you all are pros in FPL. I'd like to hear about DEFCON also, bhai. कि क्या? It's a major shift in FPL, right? Like, what do we do, man? Like, Onana's out. Like, major clusterfuck midfielders are out. You know, like people who create chaos and all that. अच्छा भाई, वो अनाना, मैंने कहा ओनाना इज आउट, वो तो डेफ कॉन के ओन गोल देता था भाई। पर हाँ डेफिनेटली भाई, एस्टन विला वाला ओनाना। बट हाँ डेफकॉन आ चुका है एंड आई थिंक काइसीडो इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ विद डेफकॉन भाई। एवरी गेम ही इज अर्निंग पॉइंट्स एंड और उसका प्राइस भी अच्छा है। बट वही है, अब क्या हम सीडीएम्स को कंसिडर कर ले फिर कि लाइक वी कैन लाइक ईज अप मनी अपफ्रंट हालैंड लाके एंड डेफकॉन के पॉइंट्स ले सकते हैं। तो अमन भाई आपसे पूछते हैं, मिस्टर डेटा साइंटिस्ट, बताओ भाई डेफकॉन का क्या करें अब। I think मतलब it definitely you cannot ignore it. तो अभी क्या है कि you have to understand कि what kind of defender profile you want to have in your team and where you can take like save the money so that you can go front heavy. है ना, अभी सबको हालैंड चाहिए, सबको ग्योक्रेस चाहिए अपनी टीम में। तो कहाँ से पैसा निकलेगा? तो पैसा वहीं से निकलेगा जहाँ से you can continue to get those points and also clean sheets every now and then. So you have to figure out कि ऐसी कौन सी teams are. अभी those who have shown up are Crystal Palace. So Crystal Palace defenders, you have Richards, you have Lecroix. These are very good defenders who are 4.55 million priced and they're continuously getting DEFCON points. So automatically इसमें क्या हो रहा है कि for these kind of defenders their floor is becoming 4 points every match irrespective of the clean sheet or not. So anywhere you're almost guaranteed a 4-pointer from these players. Also you're helping save some money so you can put in midfield and forward line. Second, like Bournemouth, Senesi is showing up with DEFCON points every match. Then you come to midfield, so people like Dewsbury, and sorry I forgot Tarkowski. He's basically literally hit DEFCON points in 60 minutes every game. So you can consider him like a season hold even at this point. He will continue to get those points. So बहुत interesting, and I think one should definitely capitalize on this strategy. Caicedo, we were discussing about Caicedo. Interestingly, he's had 2 returns also, attacking returns. He scored goals, and he scored 1 goal and I think assisted 1. So he's becoming a viable option now at 5.5 already. He's also certain for that DEFCON 2+ pointer every game. So these are important positions to save money and get those points as well. I think मेरे हिसाब से meta conversation, मेरे हिसाब से maybe you just keep 6 million kind of a defender from Arsenal. Rest you can go with cheap defenders who are सही good बात for है। DEFCON आई basically. थिंक फुलम का एंडरसन इज आल्सो वेरी गुड फॉर Anderson, डेफकॉन भाई। लास्ट गेम में भी correct. उसने पॉइंट्स दिए हैं एंड उसी ने मेरा गेम वीक थोड़ा बहुत बचाया भी है। Same विश्वा भाई same. I ये think चेल्सी did you copy my team or what? Every player you have. भाई, मेरे को लग रहा है आप मेरी कॉपी कर रहे हो भाई। आप डेटा साइंटिस्ट ऐसे ही बोल रहे हो, आप बस मेरे को कॉपी देखो कर भाई, रहे हम हो। I was discussing with the world on my YouTube channel. But I'd like भाई to मैं open तो one more question, bhai, ki, to everyone. What do you think about starting with the back 5? Because I've seen many people are doing that with many भाई 8 points each. I would tell you, being a Ruben Amorim supporter, it does not work, bro. Yeah, not always, but still, I think it does work, bro. Like, because I've seen midfielders are also blanking. भाई ज़्यादातर, not when वो you have defenders को Dallo देखो. and Luke Shaw and Lenny Yoro and Delit and Bayandir playing in goal. Also, I think this season Correct. midfield options are so many, like good premium or mid premium options that I would never go for 5 at the back. Just like it just feels so boring to have I 3 know, Yeah, but I million. saw someone got like 48 points from like 5 defenders. So I was like, wow, pretty impressed. And Yeah. then 5 players last week ahead, It's you was know. an working. anomaly. So many clean sheets actually last week. Yeah, Yeah. right Yeah. now it's working. Yeah. Yeah. It might I think work because of this week DEFCON, also. the 5 at the back is Okay. also working.
So Vishwa भाई, being a Chelsea fan भाई, पाल्मर को सबने निकाल दिया था. Palmer came back and he's having a ball भाई, like he's balling out there. तो अब क्या लगता है, मैं प्रीमियर लीग में तो गोल मारा नहीं है उसने बहुत टाइम से, बट मार दिया आई थिंक, एक्चुअली अभी मारा ना उसने मार दिया 2-2 में, ब्रेंटफोर्ड सॉरी 2-2 में ब्रेंटफोर्ड मार दिया, या ब्रेंटफोर्ड में मार दिया. बट 10.5 मिलियन फॉर पामर, और फिर आपको साला भी देखना है, हालैंड भी देखना है. डू यू थिंक इट्स अ लाइक यू शुड हैव पामर इन योर टीम, या फिर आप जाओ पेड्रो से ही काम चलाना पसंद करोगे? एटलीस्ट नाउ जाओ पेड्रो इज अ मस्ट हैव. पाल्मर के पोजीशन भी, मतलब अगर राइट पे खेलता है तो ही इज द मोस्ट इफेक्टिव ओवर देयर, तभी ही गेट्स मोर चांसेस. बट अभी सेंट्रली जब ज्यादा वो खेलता है तो मतलब उस पे रहते ही है बंदे, तो फिर इट्स हार्ड फॉर हिम टू गेट गोल्स. तो एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि तुम मत रखो इंस्टेड ऑफ ये. बट फिर इवन द नेक्स्ट ऑप्शन 7 मिलियन में आ जाते हैं मिड में, 8 मिलियन के एक दो है, तो फिर मे बी यू कैन स्टिल स्टैक अप. और मेरे लिए वही है कि वो पॉइंट्स तो देगा, एक गेम में 4 गोल मार देगा, बाकी 2-3 गेम में ब्लैंक भी कर देगा, बट फिर ओवर द लॉन्ग रन दे सकता है देगा पॉइंट्स को. सो इट्स गुड टू Bro, हैव हिम इफ यू कैन. sorry, bro, he is not हाँ. worth 10.5 yaar. Matlab, my problem is his consistency. I am a Palmer fan, okay, but I love Palmer. I hate Chelsea, but I love Palmer. Okay, it's as simple as that. But yaar, 10.5 के लिए I can't have such a inconsistent player in my team, जिसका कोई आइडिया नहीं कि ये कब हैट्रिक मारेगा या कब ब्लैंक करेगा. And for me, he is too risky right now because Chelsea is too risky as a team. I don't, other than Joao Pedro and Kukurea, I think there are a lot of risky players, risky assets to have, I think you can right? have Palmer for next game week bhai. They play Man United. I'm Yeah. pretty sure he's scoring 2 goals. एंड ब्राइटन एज वेल. तो मैं तो ट्रांसफर करने वाला हूँ नेक्स्ट गेम वीक के लिए पाल्मर. सो लेट्स So Palmer, yeah. Mm. So 100%. Palmer तो इसके unfortunately has साथ come in the differential category now. It's that's the fortunate thing, no? Though I mean, he was 50% owned in Yeah. game week 1. Right now, he's just 20%. Yeah, Yep. true. भाई, तो इसी के साथ एक ये भी क्वेश्चन है, लाइक इज Semenyo a must own right now at that price? For sure, He's a bhai. must. He's gonna get No to 8 brainer. very soon. 100%, 100%. I Everyone think owns him now Bournemouth's going or to fizzle out. Bhai, they don't have depth. I think they will fizzle out at some point in time. So I'm not really sure about that. you need to have them for the first half of the season. They always do well in the first half. Last year, same trajectory. Like they Yeah, started yeah. off very well. Even Same last thing year, is happening now. Also, the Right. management system is so intense that I feel like the players will wear out at some point. It has to happen. Yeah. What do you guys think Bhai. about Jack Grealish, bro? He's been in the reckoning, like insane, bhai. Insane story. Insane story. Yeah. Like, I'm such a big Jack fan of Grealish for 6.5 is a good player, bhai. But Bhai, Semenyo for totally. 7.6 also looks like a very good player, bhai. I will tell you, Morgan Rogers is not the player you should be having, bhai, like me. क्योंकि उसने सिर्फ धोखा दिया है भाई अभी तक मेरे को. केवी भाई कह रहे हैं, I was ranked 839 in India. Now I am ranked no one fucking cares. भाई आपको तो आदत होगी, आप आर्सेनल फैन हो. I was topping everyone's table. Now I am mid table again, bro. Arsenal fan. I feel like I'm Manchester. By we are bottom of the table. should- How can you say mid table? Mid table is top of the table for us. This banter Oh, went Lord. wrong way, भाई. हमें हमारी रियलिटी पता है भाई. तो यार आई थिंक एक तो ना जो रेलीगेशन टीम्स आई हैं लाइक सनडरलैंड, लीड्स, दे आर आल्सो डूइंग गुड भाई. एंड राइट नाउ तो जो लग रहा है दे माइट सर्वाइव. बर्नले माइट नॉट, बट दीज टू माइट. और लीड्स आउट ऑफ नोवेयर भाई डिफेंसिवली अच्छा कर रही है. तो आपका इस बात पे क्या कहना है? लाइक शुड वी हैव प्लेयर्स फ्रॉम सनडरलैंड एंड लीड्स एज वेल भाई? लेट्स गो यापर्स, should थोड़ा have आप याप players. करिए इस बारे में कि बताओ भाई. If there's one person who needs to have a Leeds player, it's me, man. Yeah. ओ यस भाई, आप तो भागे इस चक्कर में हो क्योंकि आपने लीड्स प्लेयर नहीं लिया था भाई. I don't want बट it. व्हाट That ऑन अ was- सीरियस नोट भाई, क्या लगता है आपको? सनडरलैंड, लीड्स, व्हाट डू I यू like थिंक? शुड वी हैव? I have big hopes for Sunderland. I kind of want them to survive, low-key. Like they're my dark horses for no reason. So but do you What have do you any players think, from yeah? Sunderland? Like, Yeah, I what do you have, expect from the next match? Again, like that this Villa match against Sunderland.
What भाई can we like? Is it going to be I tough, think or might have some Villa goals in that? it will be tough for Villa, 100%. मतलब उनका डिफेंसिव डेटा इज स्टिल गुड, मतलब एक एक्सजी से क्रॉस नहीं करते हो उनपे। Right. और 4 मिलियन के लिए यू कैन हैव अ सनडरलैंड डिफेंडर, एक 4 मिलियन स्पॉट तो भर ही दो डिफेंडर के लिए, कोई भी भाई रेलीगेशन मैं Right. टीम तो से। सोच रहा हूँ कि आई शुड डू लाइक रॉजर्स टू सेमेन्यो कर दूं मैं इस हफ्ते, क्योंकि ऑल दो दे प्ले सनडरलैंड भाई, आई आई फील मोर सिक्योर विद सेमेन्यो, क्योंकि सेमेन्यो परफॉर्म करता है तो मेरी रैंक ज्यादा गिरती है भाई, क्योंकि सबके पास है। Correct. मेरी हमें ऐसा भी तो सोचना पड़ता है ना कभी कभार, बिकॉज रॉजर्स यार Correct. पता नहीं क्या करेगा कब करेगा भाई, लास्ट सीजन भी उसका यही था, बाद में ही परफॉर्म करना स्टार्ट किया था उसने। बट लाइक व्हाट डू यू थिंक, सेमेन्यो ले आना चाहिए रॉजर्स की जगह, या फिर आई शुड स्टिक विद रॉजर्स फॉर दिस गेम वीक भाई सनडरलैंड के अगेंस्ट, अब जब इतना रुकी गया हूं मैं तो। Semenyo 110%. Who are Bournemouth playing? न्यूकासल। भाई बॉर्न न्यूकासल, बट न्यूकासल इज प्लेइंग बार्सिलोना टुडे, दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर। True. Hmm. स्टिल डिफेंसिवली तो गुड है ही वो लोग, गोल नहीं मार पाते Yeah. बट रोक तो देते हैं। Yeah. I तो brought in Semenyo this week anyway. Didn't look at the fixtures. I was like, I have to jump on this See, bandwagon. there's your inspiration, Dhruv. There's your Same, inspiration. same, same. देखते हैं भाई, लेट्स सी। I तो feel एक like चलो he's in form, yeah. Like I think Newcastle is not on, like they're not in the zone right now. They just like barely scored last match also. It was not like a high XG shot that Waldemar scored also. But Yeah. like their attack at least is not yet clicking. So I mean, and there's Semenyo who's right in form, and then he's also on pens, bhai. Like that was absolutely almost like shocking when he took the ball in that pen. I was like so elated कि यार nice एक और goal भी आ गया, and I brought him into the team last week only for a hit. So I'm like, thank God for that. Like he covered my hit and everything. So I think he's a fair shout. He might actually score. And as you said, they are playing Barcelona, so Newcastle will go full steam against Barcelona in Champions League. First time they're back in CL. So I'm expecting like a weaker team in on the weekend in PL. Maybe डेफिनेटली you भाई। should wait for the Barcelona game and then decide, depending हाँ on Correct. how. भाई, You मैं can तो मैं तो actually. लास्ट मोमेंट ही करूंगा, आई डोंट केयर अबाउट प्राइस फॉल्स एंड राइजेस भाई। आई मेरे को लगता है कि मेरी ना लास्ट टाइम भी लाइक आई स्टार्टेड ऑफ वेरी शेकी बट एंडेड अप बीइंग लाइक, मतलब मेरा पर्सनल बेस्ट स्कोर था, बिकॉज इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मुझे लगता है जो जल्दी पहले 10 गेम वीक में सब यूटिलाइज कर देगा ना, इवेंचुअली दे विल फेज आउट धीरे धीरे, एफपीएल में यही होता है। एंड यू True. अगर आपकी एक पेशेंट लेवल की टीम है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपको अच्छा स्कोर दे देगी। तो आई माइट एक्चुअली नॉट डू एनीथिंग, और मैं रॉजर्स को एक और चांस दे दूं संडरलैंड के अगेंस्ट, बिकॉज यू नेवर नो भाई, एमरी आके 5 गोल मार दे फिर तुम्हारा पूरा का पूरा गेम भी की बच जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग टू कंसिडर, बट माइट एज वेल डू सेमेन्यो। यार इसी के साथ जितने लोग देख रहे हैं सबके चैनल्स यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, लाइक करो पहले तो स्ट्रीम, इफ यू वांट टू विन द एफपीएल तो भाई आपको मेरी स्ट्रीम लाइक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ही लक दूंगा आपको। बट उसके अलावा भाई 10,000 सब्सक्राइबर से हम कुछ ही 9,000 दूर हैं, 9,900 दूर हैं एक्चुअली। तो बस मैं सोच रहा था अगली स्ट्रीम तक अगर वो भी हो जाए तो बढ़िया ही रहेगा। बट सबके इन सीरियस नोट, इंस्टाग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो एफपीएल कंटेंट के लिए सबको। एंड बिफोर लाइक क्लोजिंग द स्ट्रीम, मैं एक फाइनल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ भाई कि व्हाट डू यू थिंक, एक वो प्लेयर जो आपको लगता है वुड परफॉर्म एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट but like should be in your team by, if you had to give that one suggestion by, like let's start with Richard by, like what do you think bro? Yeah, mine. Uh, no idea. Someone else go. I'm thinking. Okay, I'll Sure. go. I think it should be Caicedo, because Caicedo एक अच्छे प्राइस पे आता है, वो आपको हर गेम के डेफकॉन पॉइंट्स तो दे ही रहा है, तो 4 पॉइंट तो आपके पक्के हो ही जाते हैं। 4 पॉइंट इफ यू सी ओवर 38 गेम वीक्स, दैट्स ऑलरेडी यार 144 पॉइंट, विच इज मोर देन योर 50% तो आपका वैसे ही कवर हो गया है। प्लस वो एक दो गोल या असिस्ट भी कर ही देता है ओकेजनली। सो आई थिंक Caicedo फॉर अ लॉन्गर टर्म एट दैट प्राइस इज अ वेरी गुड शाउट। फिर आप बाकी 4 मिडफील्डर्स अपने देख सकते हो। दैट इज माय ओपिनियन। मैं सोच भी रहा हूँ जब भी वाइल्ड कार्ड करूंगा आई विल ब्रिंग Caicedo इन। राइट नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट अ ट्रांसफर ऑन Caicedo, जस्ट टू ब्रिंग सम स्टेबिलिटी। तो जब मैं वाइल्ड कार्ड करूंगा आई विल ब्रिंग हिम इन।
What do you think, Aman bhai? Let's go with you. कि आपको क्या लगता है? Some player. No idea, yaar. I mean, I think at this point, I don't know if it's a bubble. I mean, I think everybody's talking about whoever is even showing slightest of the signs right now. So that Exactly. player is being talked about in the community. But yeah, Caicedo is of. I think it's the best shout that Was anybody he? would could have come up with on this panel. I don't know if somebody else has. I am not sure. Yeah, I like have maybe another. somebody like okay, sure, sure. And I feel it's some. I would try to look for some defcon defender, like defcon high defender, somebody like a Senesi, somebody like a Anderson. Like 4.5 saves you a lot of money and gives you that, like, same thing, gives you a floor of 4 points and also gives you clean sheets every now and then. So that is somebody I'd look for. Tennessee. Definitely, that's a nice shout. So let's go with Vishwajit भाई. आपको क्या लगता है? Any player like जो उतना common ना हो कि might be works not works, it doesn't matter. हम आपको we won't hold you anything. But आपका क्या, आपको what do you think कि एक ऐसा player जो हो सकता है आई game changer? थिंक थोड़ा ऐसा अंडररेटेड प्लेयर के लिए जाना है तो अगेन माय आर्सेनल बायस विल किक इन एंड आई थिंक एजे इज अ गुड शाउट ऑन द विंग. Very I true. think he'll be involved in a lot of goals, especially against teams that are like lower down the table. And we've seen like Arsenal scoring like a ton of goals against relegation teams, especially last season also and this season. And the uh, yeah, so basically chances uske zyada lag raha hai. So I think I'll go with Eze. Madweke was also a shout, but I think once Saka comes back, he'll be Eze, benched. Eze is a better shout. I had I Eze Correct. just on my I have a bench like question. weeks later Yeah. after the fixtures start getting good. After I don't know who they're playing. Man United. Wait, who are Yeah. they playing? Yeah, yeah. Yeah. They're playing City next, and then Playing United, I guess. after that, नहीं I'm नहीं Maybe. asking. भाई, United was first game week, bro. We Yeah, are yeah, not yeah. playing अच्छा, oh, हाँ, anytime sorry, soon, sorry. भाई. Bhai, हो गया yeah, City, you City. तो हो you गया. guys you guys robbed us, but that's fine. But yeah, Bhai, I had a question. Happy Like, with the what 3 points. happens when so like Martinelli, Trossard did well in the Champions League. Both had both scored a goal. So now they've also put Yes. their hands up. So is there some rotation risk involved? Like that is what's been putting me off Eze actually. I don't know when he might be rotated. Hmm. Actually, Martinelli performing yesterday was like a pleasant surprise for me also because I thought कि उसका career is almost over after Eze Yeah. arrived. But yeah, it's like a common concern, I guess. इसका कुछ कह तो नहीं सकते. But for now, I think at least in the Premier League, Eze has a spot fixed and Martinelli will be used as a rotation for cup games and maybe Champions League games here and there. Makes sense, makes sense. Also, I think maybe Eze they can play it until Odegaard is injured. If at all they want to fit him somewhere, he can also play a central role. Yeah. Yes, 100%. exactly. Might be so better off. let's go to Vishwa bhai. What's your take? Which one player do you think is underrated right now and can be something big? When the fixtures improve, matlab, maybe you can make an argument for getting Mitoma. मतलब मिड Mitoma. टेबल टीम तो है वो लोग, बट 90 मिनट्स खेलता है, decent statistics also. तो एंड दे आर अ decent attack also Brighton, जैसे भी मिड टेबल से देखा जाए, तो मे बी मिटोमा इज समवन who will shine, मतलब फ्रॉम गेम वीक 9 ऑनवर्ड्स जब भी फिक्चर्स ठीक होते हैं. यूनाइटेड ही खेल Definitely. रहा है 9 से, तो आई थिंक उसके बाद से खेलेगा वो. भाई 9 तक आई थिंक या तो हमारा मैनेजर सैक हो जाएगा और हमारे पे मैनेजर बाउंस होगा, हाँ, या हमारा मैनेजर सुधर जाएगा. तो मुझे अच्छा नहीं लगता है समझ. 9 पे वो गुड शाउट होने वाला है भाई. I क्योंकि heard Ole 7 is तक ही coming देखेंगे. back. नहीं नहीं भाई, वो सब मत सुनो, वो नहीं आ रहा. No, but like Brighton is a team which exactly fits Rajat Bhai's description. Like the most inconsistent team. Like you don't know which match Exactly. they'll play amazing. Like they might Exactly. score, like, they might beat the best team in the league on their day, and Yeah. then next they lose in Lose the team lower than them. to Leeds. That sort of a team. Yeah, भाई अभी अभी देखना, वो स्पर्स को पेलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं. I know. With you, I'm with you. हम्म. रजत I भाई feel फाइनली एक प्लेयर बताओ और वर्ड्स मत बोलना प्लीज. बहुत देख Birds लिया नहीं हमने बोलूंगा, उसे. but Liverpool का ही player बोलूंगा. Guys, if you don't have Hugo Ekitike, now
सबके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि यार इजाक आ जाएगा, ओके, Yeah. एंड इजाक विल स्टार्ट प्लेइंग, राइट? फेयर, ओके। देयर इज द नंबर ऑफ मैचेस लिवरपूल हैव, ओके। हम लोग अनलाइक सर्टेन टीम्स हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, सो वी हैव एस्टन विला को ऐसे आपको बोलने की जरूरत नहीं थी भाई कि एस्टन विला वैसे इतनी नीचे है। आप अब यार, यू आर नहीं नहीं, लाइक गोइंग ऑन आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड ब्रो, बिगेस्ट बिगेस्ट क्लब इन द क्लब। वर्ल्ड। ओह माय गॉड, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक बार मिस हो गया हमसे, दैट इज फाइन। So Hugo Ekitike, I'll tell you why. Very simple. Started the season on fire. Okay, three goals, one assist already. He's gonna very actively be rotated with Isaac. I don't see Isaac and Ekitike playing together. And Isaac is यार इतने पैसे खर्चे वही start करेगा. Okay, but very simple logic. I think Ekitike, even when he comes on as a sub, for example, okay, he has he can score like tap ins, he can score from distance, he can score a bloody header. He is like he's like another Firmino, and Firmino is too big of a comparison. But and I never thought we could ever replace Firmino. That's the kind of false nine he was. But we have finally found a player who's very close, right? And who might actually end up scoring more goals. Firmino wasn't known for scoring goals. He was known for, being the perfect player to complement Mane and Salah, right? Ekitike is someone similar, but वो खुद भी गोल मारता है. And I mean, it's a no-brainer for me to have Ekitike on your team. Words भी मैं बोलने वाला था, लेकिन चलो ठीक है. For another day. कोई नहीं भाई, मैं आपसे बात करूंगा जब अभी ग्रीलिश मर्सीसाइड डर्बी में दिखाएगा लिवरपूल को कि हु Grealish इज द was my बॉस। captain, by the way, guys. Last game week, he was my captain. भाई I was so आप excited. जिसको कैप्टन करते हो भाई वो ही बर्बाद हो जाता है। एक Yes, yes, जाने spot से on. पहले भाई केवी रिएक्ट की टीम को रेट कर देते हैं। उनका गोलकीपर है सेल्स, लैकोरिक्स है उनके पास, गेब्रियल है, टिम्बर है, वैंडर वैन है, सिमेन्यो है, नेटो है, काइसिडो है, वुड है, जाओ पेड्रो है, हालैंड है। भाई आपके पास कौन नहीं है? मेरा एक बेस्ट कुदूस है, Ben रॉजर्स Chilwell. रॉजर्स Rogers finished on the bench. Oh my God. भाई आर यू चैट जीपीटी? I'm jealous. I'm jealous. बिकॉज दिस इज इनसेन भाई। आपके पास बस साला नहीं है, साला बट नहीं है. ठीक है भाई, वो भी 90 मिनट के बाद ही दिखता है वैसे तो, पर दैट Oh, इज फाइन भाई। इसी के साथ हम आई थिंक ये स्ट्रीम को एंड करते हैं। पहले तो गाइस प्लीज सबको फॉलो कर लो। अगेन डिस्क्रिप्शन में एफपीएल पल्स टॉक का है, इवन गोलोय का है। बाकी लोग के यूट्यूब चैनल ही नहीं है भाई, तो उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाला है, कर लो एंड प्लीज ज्वाइन। मतलब आईएफपीएल को तो आप लोग फॉलो करो, बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। इवन आप लोग यार क्रिएटर्स गेट इन टच विद रजत भाई एंड आई थिंक Yeah. बहुत मजा आने वाला है आगे एफपीएल में। एंड एफपीएल पल्स टॉक को भी भाई प्लीज फॉलो करो, और अमन भाई इवन यू कैन गेट इन टच विद ऑल ऑफ देम। आप भी इनको इनवाइट करो, मजा Absolutely. आएगा। 4 लोग के अलावा थोड़े और लोग भी हों, आप भी चाह रहे हो, ये भी चाह रहे हैं कुछ करके क्रेजी कुछ चैलेंज Let's टाइप do करते हैं भाई। something. एफपीएल Yeah, पल्स Yes, yeah, टॉक वर्सेस यापर्स करते हैं भाई। आई कैन बी द absolutely. मीडिएटर, बट for sure, for थैंक sure. यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मजा आ गया स्ट्रीम करके बहुत टाइम बाद। लाइक मतलब बहुत टाइम गया, मैं तो पहली बार ही एफपीएल स्ट्रीम कर रहा हूँ, बट बहुत टाइम बाद मैंने एफपीएल की बातें करी है इतनी, एंड इट वाज रियली ग्रेट फन। होपफुली वी कैन कंटिन्यू डूइंग स्टफ लाइक दिस, और आप लोगों के चैनल्स पे भी करें सून। Thank you so much. I'll just end the stream and then I'll talk to you guys in 1 minute back room में। बस thank you guys जो भी जिन्होंने भी join किया। We had at some point 15-16 people watching, likes भी आ गए हैं, थोड़े और बढ़ा दो, subscribe कर लो, सबको follow कर लो again and let's win। I like FPL together भाई। अगर इंडिया के players top पे हो तो भाई फिर कौन ही रोक सकता है आगे। Let's go। इसी के साथ thank you so much for joining। Thank you Let's guys. end the Bye. stream। Thank you, guys. thank Thank you you. so much. Thanks, everyone. अरे भाई गलत चल रही, सॉरी।